अभी तो आज मैं एक और प्रॉपर्टी पे आया हूँ थोड़ा सा विज़िट करने के लिए। इनके पास कुछ पोनीज़ हैं, कुछ गोट्स हैं। छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसको विज़िट करने हैं। मैंने कहा कि यार आज वीडियो बना दें तो यूट्यूब पे रख लेंगे। देख लें। ओह माय गॉड, ओह रियली यार, चेक कर, इसके बकरी भी है। We've got young ones for sale. The rest, ये सारे इनके चिकन है। all go in the cart and we drive them. ये सारे इनके पोनीज। So that one there, he's probably, and we've got one that's got one eye down there. ओके, ये बाहर खुला घूम रहे हैं। ये देखिए, सारे इनके पोनीज और 93 एकड़ है ये प्रॉपर्टी। ये चेक करें। I thought they are pygmy goats, no? They're all rangeland. These are only the babies. Come in. Okay. Same chicken with the chick. Oh, sorry. This one here is my daughter's goat. This is Bella. Bella, okay. And this is Black Betty. Hello, Becky. Monkey. प्रॉपर्टी यार, मतलब नहर बन के घर से जा रही है। ये देखिए, हमें फॉलो कर रहे हैं। ये एक्चुअली उस लेडी को फॉलो कर रहे हैं। He's only a yearling. He's only a baby. हाँ, इस बेबी है। And these are the babies that have all got to be sold home. These are all just been weaned, so these are all 5 and 6 months old. My God, looks beautiful. And then I got miniatures that I've got to wean next week. Ah, The little tiny ones. But all of these bar one will be after sale. Marcel, how much? These bulls, those two there, Yeah. are around $1,500, $2,000. Okay. They haven't long come off their mum. Hmm. Have you, Cadbury? Ah. All these here have been hand raised.
ये देखिए इसमें कुत्ते हैं जो हेल्प करेंगे हमारी। ये देखिए कुत्ते हमारे साथ गाड़ी में चल रहे हैं और वो ब्राह्मण कैटल है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। पुल भी आ रहा है, बहुत बड़ा है। मतलब इतना बारिश नहीं हुई, हर जगह पे मतलब ये ग्रास है ही नहीं। वो फार्मर को ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि फीड इनको जो हाथ से देनी पड़ती है वो एक्सपेंसिव पड़ता है। कमज़ोर भी हो गए हैं क्योंकि फीड नहीं है। ये जो ग्रास है ये इनसे हाथ से दिया हुआ है ख़रीद कर। Cows need the calves gone. Okay. This one here Yeah. and that one, the two skinny ones, they're feeding the calves. Okay. And everything else is doing all right, but they're just struggling. Yeah, because they're feeding, yeah? Yeah, that's why I need to sell them. I've been selling them off slowly, so they're two bull calves. And that's their dad. Go on, go over to the hay, guys. What breed is that one? The white one? That's another bull. That's a speckled park. Okay. He only come in about 4 months ago because he's my mum's bull. Okay. And she had nowhere to put him.